Hello student, welcome to Pharma Digital, and here in this video I am gonna discuss about the different types of blood cell. The blood cell consists of basically three types of cell. One is RBC, second one is WBC, and the third one is platelet. So first we briefly discuss about the RBC, and these RBC cell are also called as erythrocyte and otherwise also called as red blood corpuscles. And it is a circular biconcave and non nucleated disc, मीन उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता, and it is contain about 62 to 63% or nearly about 62.5% of water, and remaining 35% contain hemoglobin and 2.5% of different enzymes, vitamins and ions. And its diameter is about 7.5 to 8.5 micrometer, and its thickness is about 1.7 to 2.2 micrometer. And here in this picture, here the diameter is about 7.5 micrometer, and here the thickness means this part, this is almost about the 2 micrometer. Then its normal amount, it is present slightly higher in case of birth, and that is 6 to 7 million per cubic millimeter at the birth. Here the cubic millimeter is its unit to count the red blood cell, and in case of birth there is 6 to 7 million of cubic millimeter we found red blood cell, and in case of adult slightly lower than the birth time, that is 5 to 6 million per cubic millimeter with the average of 5.5 million per cubic millimeter, and that is in case of male, and like that in case of female 4.5 to 5.5 per cubic millimeter with the average of 5 million per cubic millimeter is normal in case of female. Means according to these statements, we know that slightly lower RBC number in females as compared to males, and clinically 5 millions is taken as the total 100% RBC count. Means if anyone have 5 millions per cubic millimeter RBC, that person is considered as a healthy in case of RBC. Then the lifespan of RBC is about 120 days, and it is manufactured in bone marrow. Means once the new red blood cell is formed, that is that's lifespan is about 120 days. Means after 120 days it is destroyed. यहाँ पे इस पिक्चर पे देख सकते हो, ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं बोन मैरो, बोन के अंदर वाला पार्ट, जिसमें से रेड ब्लड सेल, लिम्फोसाइट, बहुत सारे प्लाज्मा सेल, बहुत मतलब डिफरेंट जो ब्लड सेल है वो यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं. और यहाँ पे दूसरे वाले पिक्चर पे यहाँ पे देखो, इसका जो डायमीटर है एंड डायमीटर है यहाँ पे 7.5 माइक्रोमीटर, एंड थिकनेस जो है वो 2.0 माइक्रोमीटर है उसका. Next we comes to hemoglobin. Hemoglobin, it is the main composition of the RBC, and it is the red oxygen carrying pigments. Means due to this hemoglobin the RBC color is red. And the term hemoglobin is derived from the two words, one is hem and another is globin. Hem means it is the ferrous and iron containing part, and here the globin means proteins. And like that, globin is a proteins that is built up from the polypeptide chains. Here the polypeptide means it is the simple bonding between the protein molecules. If the two protein molecules is attached by a polypeptide bond. So here this globin part is built from the 2 alpha and 2 beta chain, or 2 alpha and 2 beta globin. That's why the normal adult hemoglobin is written as alpha 2 beta 2, because it is consists of 2 alpha
globin chain or two alpha globins and two beta globins. And in one molecule of hemoglobin there are four heme molecules are present, and that four heme molecules, and as we know heme is an iron containing part, that's why this four heme part is carried or is gathering four iron atom, and each iron atom capture or gather one molecules of oxygen. That's why these four iron atoms gather the four molecules of oxygen, and the molecular weight of the heme is 68,000. And in short, the hemoglobin is composed of four globin molecules, that is four globin molecules means two alpha globins and two beta globins, and this is combined or bonding by the polypeptide chain or polypeptide bond, and it is also contain four molecules of heme, and that's why these four heme molecules also carry four molecules of oxygen. So simply in one molecules of hemoglobin there is four globin molecules. Out of four globin, two alpha and two beta globins, and it also contain four heme molecules. These four heme molecules carry or gather or capture the four molecules of oxygen also. And here this yellow part is alpha chain and this blue part is beta chain, and and here this is the heme, means simply the hemoglobin is made up of from four protein molecules, that is two identical alpha units and two identical beta units. Next we discuss about the some function of the RBC, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम दी लंग्स टू टिश्यू। जैसे कि हमें पता है कि हार्ट से जो है वो ब्लड जो है वो पंप होके लंग्स को जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, तो वहाँ पे ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरी करके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करता है। ये आरबीसी मीन सिंपली लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो गैदर करने का काम होता है ये हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट, इट एक्ट एज एन एक्सीलेंट एसिड बेस बफर। मीन्स इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ये हमारी बॉडी का जो एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर है, मीन्स हमारे बॉडी का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसे मेंटेन करके रखने में मदद करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ब्लड ग्रुप बिकॉज इट कंटेन एंटीजन ऑन इट्स सरफेस। मीन्स ये एक केमिकल कॉम्पोजिशन है एंटीजन, जो कि ये एंटीजन एक्टिवेट होता है किसी भी हम पैथोजन हो या कोई भी मटेरियल्स अगर हमारे बॉडी में जाता है तो ये एंटीजन एक्टिवेट होता है और उसे बॉडी को मैसेज देता है और उसके रिगार्डिंग जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होकर ये एंटीजन के अगेंस्ट में वो एक्शन दिखाता है। तो सिंपली यहाँ पे कुछ एंटीजन पाए जाते हैं जिसकी मदद से जो है वो हमें ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करने में मदद होता है। एंड नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी WBC or WBC stands for white blood cell or white blood corpuscles, and it is also called as leukocyte, and RBC called as erythrocyte, and here the WBC is called as leukocyte, and here its lifespan is about 12 to 20 days, and in case of RBC the lifespan is 120 days. And basically two types of WBC are found, that is one is granulocyte and another is agranulocyte. Here there are overall 5 types of WBC are present. These 3 neutrophils, eosinophils, basophils are granulocyte because here in this cytoplasm there are, यहाँ पे देख सकते हो जो दाने जैसा डॉटेड मटेरियल्स है उसे ग्रान्यूल्स बोलते हैं, and that's why it is also called as these 3 types of neutrophil, eosinophil and basophil is comes under the categories of granulocyte. And next, monocyte and lymphocyte are comes under the categories of agranulocyte because these two cells doesn't contains granules in their cytoplasm. So first we briefly discuss about the granulocyte. And basically as we know these WBC granules or WBC granulocytes are 3 types. One is neutrophils, basophils and eosinophils. So first we briefly discuss about the neutrophils, and it is 10 to 15 micrometer in diameter, and it contain purple nucleus, means their nucleus is purple in color, and it is 1 to 6 lobes, and that's why it is also called as polymorphonuclear leukocyte. means उसका जो न्यूक्लियस है वो 1 से
6 लोब का होता है, और जितना ज़्यादा लोब होगा उतना मैच्योर जो है वो न्यूट्रोफिल्स हम समझ सकते हैं। मीन्स अगर मान लो 2 लोब, एक लोब का एक, अगर एक न्यूट्रोफिल एक लोब का न्यूक्लियस है और दूसरा जो है अगर 2 लोब का न्यूक्लियस है, तो सिंपली हम ये 2 लोब वाले न्यूट्रोफिल्स को हम ज़्यादा मैच्योर्ड समझेंगे और ज़्यादा मैच्योर्ड न्यूट्रोफिल्स जो है हम समझेंगे। एंड देयर साइटोप्लाज्म इज स्लाइटली ब्लूइश इन कलर एंड ग्रैन्यूल्स आर also present because these neutrophils are comes under the categories of granulocytes, and it contains fine sand-like particles that is called as pinpoint granules. Means the granules present in neutrophils are called as pinpoint granules. And neutrophils consist of 60 to 70% of the total WBC number, and in case of children it is 40%, means slightly lower than the adult in case of children. And increase neutrophil number means increase more than 60 to 70%, that is called as neutrophilia, and decrease in number than the 60 to 70% is called as neutrophilia. यहाँ पे एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, ये जो फिलिया सॉफिक्स आता है, सॉफिक्स मीन्स पीछे वाले नाम, अगर फिलिया सॉफिक्स आता है तो इंक्रीज इन नंबर, एंड पेनिया सॉफिक्स आता है तो डिक्रीज इन नंबर, और एक रहता है साइटोसिस। साइटोसिस का मतलब भी इंक्रीज होता है, मीन्स अगर फिलिया और साइटोसिस दोनों आए तो इंक्रीज इन नंबर होगा, और पेनिया आए तो डिक्रीज इन नंबर होगा। तो बेसिक फंक्शन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स क्या है? इट वर्क्स बाय फागोसाइटोसिस एक्शंस व्हेनेवर द बॉडी अटैक्ड बाय एनी बैक्टीरिया और pathogen, and that's why neutrophil are called as first line defense mechanism cell. तो यहाँ पे देखो एक टर्म आया फागोसाइटोसिस। फागोसाइटोसिस मीन्स अगर मान लो ये तुम्हारा पाथोजन है, मीन्स जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है, तो ये न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, यहाँ ये धीरे धीरे निगल लेगा, अपनी ओर निगल लेगा और उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। तो ये होता है फागोसाइटोसिस एक्शन। तो देखते हैं ये फागोसाइटोसिस एक्शन को अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम देखते हैं। Next we discuss about the second type of granulocyte, and that is the eosinophil. This term is almost all of we convenient with this term because some of the patients severely infected from the eosinophilia. तो यहाँ पे इसका जो डायमीटर है वो 12 से 17 माइक्रोमीटर रहता है, जो कि 10 से 15 जो है वो यहाँ पे 10 से 15 न्यूट्रोफिल्स में रहता था, यहाँ पे eosinophil में 12 से 17 उसका डायमीटर है। दैट्स वाई इट इज स्लाइटली लार्जर देन द न्यूट्रोफिल्स, एंड इट्स न्यूक्लियस इज हियर, द न्यूक्लियस इज स्लाइटली पर्पल इन कलर एंड इट इज बाइलोब। इस पिक्चर पे आप साफ देख सकते हो, इसका जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब है। एंड द साइटोप्लाज्म मीन्स यहाँ पे जो ये पार्ट देख रहे हो, ये साइटोप्लाज्म जो है वो स्लाइटली पिंक इन कलर दिखाई देता है। अगर ये हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये स्लाइटली पिंक इन कलर दिखाई देगा। एंड द साइटोप्लाज्म ऑल्सो कॉन्टेन कोर्स ब्राइट एंड स्लाइटली, ये जो देखो कोर्स ब्राइट एंड स्लाइटली रेड कलर ग्रैन्यूल्स विच इज प्रेजेंट इन रिच इन हिस्टामिन एंड लाइसोजाइम। यहाँ पे देखो लाइसोजाइम ये एक ऐसी एंजाइम है जो कि फागोसाइटिक एक्शन कराने में मदद करता है, और दूसरा जो है वो हिस्टामिन। हिस्टामिन एक लोकल हार्मोन्स है, ये ग्रैन्यूल्स में पाए जाते हैं। जब भी हमारे बॉडी में कोई भी सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, अगर मान लो कोई भी चींटी तुम्हें काट दिया हो या कोई भी कुछ भी, तो ये ग्रैन्यूल्स में से क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज करेगा और उस पार्ट में जाके वो सेंसिटिविटी रिएक्शन को कम करने की कोशिश करेगा। तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अगर कोई भी एंट हो गया या इंसेक्ट हो गया तुम्हें फाइट कर लेता है तो उस जगह पे रेड होके वो खुजली होना स्टार्ट हो जाता है, एंड कुछ देर बाद जो है वो अपने आप वैनिश हो जाता है और अपने आप कम हो जाता है। क्यों? उस पार्ट में ये हिस्टामाइन जाके रिलीज होके वो अपना एक्शन दिखाया। लेकिन जब भी बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ये हिस्टामाइन रिलीज होगा तो हमें सीवियर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी दिखाई देता है।
क्योंकि हमारे बॉडी में सभी चीज़ों का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है। जैसे कि ब्लड अगर कम हो भी हमें खतरा पैदा होता है, ज़्यादा हो तो भी हमें मुश्किल पैदा करता है। तो वैसे ही ये हिस्टामाइन जो है नेचुरली जो है वो सेंसिटिव रिएक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में हिस्टामाइन भी रिलीज करें तो एक्सेसिव सेंसिटिविटी रिएक्शन पैदा करने का भी खतरा यहाँ पे बन जाता है। एंड हियर द नॉर्मल यूसिनोफिल काउंट इज 1 to 4%, and increase in number is called as eosinophilia and decrease in number is called as eosinopenia। एंड इसका जो फंक्शन है माइल्ड फागोसाइटिक एक्शन दिखाता है ड्यू टू दिस लाइसोजाइम एंजाइम्स, एंड इट इज ऑल्सो लिमिट द इंटेंसिटी ऑफ एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू द ग्रैन्यूल्स कंटेन हिस्टामाइन। Next we discuss about the third categories of granulocyte, that is basophil, and it is 14 to 16 micrometer in diameter and nucleus is bilobed as eosinophil, and cytoplasm is appears blue and contains coarse purple or blue color granules which is also contain histamine and heparin। eosinophil में क्या रहता था? eosinophil में हिस्टामाइन के साथ लाइसोजाइम रहता था, यहाँ पे हिस्टामाइन के साथ हेपारिन रहेगा। हेपारिन ये हमारे बॉडी में एंटीकोआगुलेंट के हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि जब भी हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होता है तो ये हेपारिन जो है हमारे बॉडी में जो ब्लड को फ्लूइड स्टेट में मेंटेन रखने में मदद करता है। ये नेचुरल एंटीकोआगुलेंट है। ये एग्जाम में एमसीक्यूज के हिसाब से भी पूछे जाते हैं। व्हिच इज द नेचुरल एंटीकोआगुलेंट फाउंड इन ब्लड, दैट इज हेपारिन। And these basophil also contain 0.5 to 1% of the total WBC. And here some function of the basophils are carried out, like that mild phagocytosis, and it liberates heparin which act as a anticoagulants and keep the blood in fluid state when it is circulate, and also liberate histamine which is protect from the allergen. Here the allergen means the agent which create allergic reaction to our body. Next we briefly discuss about the second subcategories of the WBC, that is agranulocyte, means which the WBC doesn't contain granules and it also contains single nucleus or which is not lobed, means in case of granulocyte that is more than one lobe nucleus are found, because and here in case of agranulocyte only one lobe nucleus is present and the cytoplasm doesn't contain any granules. Next we briefly discuss about the lymphocyte, because these agranulocyte are first briefly classified into two categories, lymphocyte and monocyte. So here first we briefly discuss about the lymphocyte, and it is represent about 20 to 40% of the total WBC, and nucleus is round, oval or kidney shape, and the lymphocyte is of two types, means lymphocyte is further subclassified into two types. One is large lymphocyte, that is also called as T lymphocyte, and another is small lymphocyte, that is also called as B lymphocyte. And here the large lymphocyte is 10 to 14 micrometer in diameter and it consists of 25% of the total WBC. एक चीज़ तुम लोग ध्यान रखना, ये जो नंबर हम लोग लिख रहे हैं ये अप्रॉक्स है, मीन्स डिफरेंट बुक में जो है वो डिफरेंट नंबर जो है वो देता है। यहाँ पे 20 से 40 दिखा देगा, कहीं यहाँ पे 18 से 38 भी देता है। तो हमें ये जो नंबर है लिखते वक्त अप्रॉक्स जो है हमें लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हल्का जो है वो डिफर रहता है बुक टू बुक। And next is small lymphocyte. Small lymphocyte is also called as B lymphocyte, and its diameter is about 7 to 10 micrometer in diameter, and it consists of about 50% of the total WBC. And in case of large lymphocyte, that is total of 25% of the total WBC. Here small lymphocyte is about 15% of the total WBC, and it is responsible for the एंटीबॉडी प्रोडक्शन। यहाँ पे एंटीबॉडी वर्ड आया, ये एंटीजन के अगेंस्ट में एक्टिवेट होता है। एंटीजन क्या होता है? देखो, जब भी कोई पैथोजन हो या डस्ट पार्टिकल्स हो या एनी टाइप ऑफ डिजीज कॉजिंग मटेरियल्स हो, उसे हम सिंपली एंटीजेंस बोलते हैं। और एंटीजेंस कब बोलते हैं? जब ये बॉडी के अंदर जाएगा। तो ये बॉडी के अंदर जाने के बाद वो एंटीजेंस क्या करेगा?
वो हमारे बॉडी में डिजीज पैदा करने की कोशिश करेगा। तो ये एंटीजन के अगेंस्ट में ये एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप करेगा, और ये एंटीजन से जो भी खतरा हमें मिलेगा तो ये उसे रोकने की कोशिश करेगा। मीन्स ये एंटीजन के अगेंस्ट में ये बॉडीगार्ड की तरह काम करेगा। मीन्स ये एंटीजन के साथ ये एंटीबॉडी जो है वो फाइट करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, हमें जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा और हमें डिजीज का खतरा जो है हमें अवॉइड करेगा ड्यू टू दिस एंटीबॉडी प्रोडक्शन। मीन्स दिस lymphocyte is responsible for the antibody production, and both large and small lymphocyte have the small structure, and it contains nucleus, and it is large and purple in color. Means nucleus is slightly large and its color is purple, and cytoplasm is pale blue in color. Pale blue means light blue in color, and increase in lymphocyte is called as lymphocytosis or lymphopenia, lymphocytosis or lymphophilia, and it decrease in number is called as lymphopenia. And it has some specific actions, like it produce antibodies, that's why it able to maintain the immune substance or create the immune substance which is antibodies, which is able to slow the sensitivity reactions or which able to enhance the immune system of our body. And here the structure and color appearance of the or microscopical appearance of the lymphocyte. Next we discuss about the second type of agranulocyte, that is monocyte, and it is the largest WBC, and its diameter is about 15 to 22 micrometer in diameter, and the nucleus is pale in color, means light in color, and it's a light pale purple or pale blue in color, its nucleus, and it is round and kidney shaped, and it present in one side of the cell. Means ऐसे one side of the cell जो है वो हमें प्रेजेंट दिखाई देगा, और ये हम कब ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब हम माइक्रोस्कोपिकल ऑब्जर्वेशन हम करेंगे। तो नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म इज क्लियर एंड पेल ब्लू इन कलर और पेल पिंक इन कलर। नेक्स्ट, मोनोसाइट कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्स 2 to 5% ऑफ द टोटल WBC। कोई किताब में 2 to 8% भी देता है। नेक्स्ट, इट्स फंक्शन, it is a active phagocytosis, and it follows the neutrophils in the area of infections or inflammations and constitute the second line defense। जैसे कि न्यूट्रोफिल में हम देखा था कि ये फागोसाइटोसिस एक्शन दिखाता है, तो ये मोनोसाइट जो है उसे मदद करता है फागोसाइटोसिस एक्शन दिखाने के लिए। तो जो प्राइमरी फागोसाइटोसिस का एक्शन वो दिखाएगा वो है न्यूट्रोफिल्स, और सेकेंडरी और उसे जो मदद करेगा वो है मोनोसाइट। एंड फर्स्ट न्यूट्रोफिल्स इज create the first line defense mechanism, and here the monocyte is created second line body defense mechanism, and it is also able to kill the tumor cell means excessive जो ग्रोथ रहता है टिश्यूज का उसे भी ये किल करने में मदद करता है। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द मोनोसाइट। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये पिक्चर, ये है उसका न्यूक्लियस एंड ये है उसका साइटोप्लाज्म। तो जो टेस्ट में हम ये डिफरेंट ल्यूकोसाइट को हम एनालिसिस करते हैं, और जब भी हम पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं जहाँ पे हम न्यूट्रोफिल्स का हमारा अमाउंट, लिम्फोसाइट का नंबर, मोनोसाइट, यूसिनोफिल, वैसोफिल, टोटल ये WBC का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उस टेस्ट को बोलते हैं DLC, मीन्स डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो यहाँ पे देखो न्यूट्रोफिल्स का जो नॉर्मल अमाउंट है 40 to 60, लिम्फोसाइट का 20 to 40, मोनोसाइट का 2 to 8, एंड नेक्स्ट यूसिनोफिल का 1 to 4, एंड वैसोफिल का 0.5 to 1। सो दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ DLC टेस्ट। लाइक दैट one more test is detect, or one more test is also carried out, in which the total number of the leukocyte is count, that is called as TLC, and TLC stand for total leukocyte count।
and here the normal value is 4000 to 11000 per cubic millimeter, and TLC decrease less than 4000 cubic per cubic millimeter is called as leukopenia, and increase in 11000 per cubic millimeter is called as ल्यूकोसाइटोसिस। और हमारे बॉडी में ये ल्यूकोसाइट का प्रॉपर मेंटेनेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें बॉडी का जो इम्यूनी सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है, एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है, फागोसाइटोसिस एक्शन दिखाता है। तो ये टीएलसी का नंबर जो है और डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट का जो नंबर है हमारे बॉडी में बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है हमें हेल्दी रहने के लिए। एंड नेक्स्ट last blood cell is platelets, and it is also called as thrombocyte, and platelet means small plate, and it is derived from the two words, one is thrombo and another is cytes। thrombo means lump means clotting means यहाँ पे एक गुच्छा मान सकते हो, and cyte means cell means a group of cell, and platelets are the smallest blood cells, and that diameter is about 2 to 5 micrometer, and it is colorless, spherical, oval or rounded और ग्रानुलेटेड सेल, एंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ग्रान्यूल्स पाए जाते हैं, ये ग्रानुलर नहीं है, ये ग्रान्यूल्स पाए जाते हैं, और उसका जो शेप है वो स्पेरिकल है, ओवल है और राउंडेड है। एंड उसके साइटोप्लाज्म में गोल्गी एपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब जो है वो पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म, जैसे कि बताया था ये न्यूक्लियस, और वो ये सराउंडिंग पार्ट जो है वो साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस ये सब पाए जाते हैं, और नॉर्मल काउंट जो है वो 1.5 to 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर है, एक एवरेज के साथ जो है 2.5 लाख जो है वो पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये नॉर्मल काउंट है। एंड इसका जो लाइफ स्पान है वो 8 से 12 दिन का होता है। देखो आरबीसी का 120 और डब्ल्यूबीसी का 12 से 20, ये प्लेटलेट का जो है वो 8 से 12 दिन का उसका लाइफ स्पान है। एंड इंक्रीज इन प्लेटलेट्स कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस, एंड डिक्रीज इन नंबर इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। एंड दीज प्लेटलेट्स इज ऑल्सो हैव सम स्पेसिफिक फंक्शंस लाइक इट हेल्प्स टू अरेस्ट द ब्लीडिंग, एंड इट एक्ट एज ए ब्लड कोआगुलेशन मीन्स जैसे कि लम्फ क्रिएट करता है, तो ये ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज ए माइल्ड फागोसाइटिक एक्शंस मीन्स ये बैक्टीरिया और पैथोजन किलिंग में भी ये हमें मदद करता है मीन्स, बट इट इज माइल्ड फागोसाइटिक मीन्स नॉट द प्राइमरी फागोसाइटिक एक्शन, इट क्रिएट माइल्ड फागोसाइटिक। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कैसे लम्प क्रिएट करके ये जो है वो ब्लड क्लॉटिंग कराने में मदद कर रहा है। और ये कलरलेस सेल है, यहाँ पे देख सकते हो ये कैसे ब्लड सेल को क्लॉट करके ये ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक, एंड हियर वी ब्रीफली डिस्कस अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, वन इज RBC, WBC and platelets. If you have any kind of doubt, please register your comment in comment box. Thank you.